5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम टू बी हेल्दी इंडिया। ये वीडियो आपके और आपके फैमिली के सेफ्टी के लिए बनाई जा रही है। अगर आपने 5 अप्रैल को दिया या फिर मोमबत्ती जलाने से पहले गलती से भी अपने हाथों को सैनिटाइज किया हो, किसी भी ब्रांड का हो, तो ये वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रहा हूँ। Let's see a close-up shot. This is a Dettol and sanitizer. You can almost find it in any shop, right? I'm not promoting Dettol. It's just for your safety. So let me put few drops of hand sanitizer. This is the amount of sanitizer that we use on our hands, right? This is a small portion. Usually we use always. So let's light a fire. Sorry for the background noise. This is a construction going on around me. So let's see. I touch this. Okay, we don't see anything, right? We don't see anything at the moment. So there's no flame, no fire, nothing. Let's try a tissue close to this and see whether we can light up the fire from it. There you can see. There's an invisible fire which lights up here. Invisible fire which lights up and is highly dangerous. So again, you can see from the naked eyes or from the camera lens, there is no flame at all. It's invisible flame. So when I bring a tissue paper close to it, you will see a fire. There you go. It's highly dangerous. Guys, be very careful. Be very careful whenever you're using hand sanitizers, and if you're in a cold country, don't get too close to the fire, because when you get too close to the fire, your hands might get fire, and especially if you're applying it on your kids, it's highly dangerous. You can see there's no flame at all. The flame is invisible, but when I put my hand closer to it, I can feel the fire, I can feel the heat. So be very careful. Take care of yourself, take care of your family, and stay home, stay safe. यू ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों ने देखा कि आग कितनी खतरनाक हो सकती है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। हमारे बच्चे हमेशा सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं, महिलाएं खाना बनाने से पहले या फिर कभी भी इस्तेमाल करती रहती है, तो उन लोगों तक पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको इस वीडियो का मोटिव समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जाके। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जब तक आप खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।